Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Advanced Web Designing. Today we are going to see last topic of this chapter. So let's begin to finish this chapter. Today we are going to study web hosting, types of web hosting, and lastly we are going to see solution of your exercise coding from textbook. So let's start one by one. Web hosting. Now before starting what is web hosting, let us revise some points. Like you have seen what is web page. So what is web page? Yes, web page is nothing but any HTML document which we are going to see in any browser like Mozilla Firefox, Internet Explorer or Netscape Navigator. So that is called as web page. मीन्स इसका कहने का क्या मतलब है, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हम लोग ने जो HTML का कोडिंग हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि नोटपैड. ओके, सो वी आर राइटिंग कोडिंग इन नोटपैड, बट वेयर वी आर विविंग द आउटपुट, हम लोग आउटपुट कहाँ पे देखते हैं, किसी भी ब्राउजर में देखते हैं. लाइक वी आर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखता है, कोई मोजिला फायरफॉक्स पे, कोई गूगल क्रोम पे. So that page which we view in the browser is called as a web page. जो पेज हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं या किसी ब्राउजर में देखते हैं, उस पेज को हम लोग बोलेंगे वेब पेज. नाउ नेक्स्ट इज वेबसाइट. What is this website? What is website? Website is nothing but it is a collection of all these web pages. So सिर्फ एक पेज रहेगा तो उसे वेब पेज कहेंगे, लेकिन बहुत सारे वेब पेजेस अगर रहेंगे तो क्या कहते हैं, वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल Facebook. Facebook is what? It is a website where we are going to see multiple pages. Like first page of Facebook is what? Login page. Once you log in, you can see different pages. Like first you are going to see all the posts posted by your friends. Then when we click on friends list, we can see different web page, that is we can see the list of our friends. Then if you want to search any new thing, then you go on the search button. When you click on the search button, then you are going to see another page. Likewise, we can see many web pages in the Facebook website. So that is called as a website. What is website? It is a collection of multiple web pages. Okay. Now, idea about web page and website is clear to you. So, till now we have created lots of web pages. अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ाई किया, हम लोग ने बहुत सारे वेब पेजेस बनाए हैं, जैसे कि ऑडियो का बनाया, वीडियो का बनाया, इमेज मैपिंग, then inline frames, CSS, all this. We have created lots of web pages till now. But tell me one thing, whether these web pages are visible by other users when they type on the internet. अगर किसी और यूजर ने किसी यूजर को अगर हमारा वेब पेज हम लोग ने जो बनाया वो देखना है, तो अगर उन्होंने इंटरनेट में सर्च किया हमारा वेब पेज, तो क्या वो देख सकते हैं? नहीं. Okay, they are not able to see our web pages. Why? Yes, now the work comes of web hosting. Why they are not able to see our web pages? Because we have not posted our web pages on the internet. That's why others cannot see our web pages. Okay, तो अब ये वेब होस्टिंग क्या होता है वो देखेंगे हम लोग. Web hosting is a service that allows organizations and individuals to post a website or web page onto the internet. तो वेबसाइट या वेब पेजेस हम लोग या कोई भी, आप, मैं या कोई और, कोई भी अपना वेब पेज या अपनी वेबसाइट अगर पोस्ट करना चाहता है नेट पे, इंटरनेट पे, ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी, ओके, कोई कंपनी है, उसको भी अपना वेबसाइट या अपना वेब पेज कहाँ पे पोस्ट करना है, इंटरनेट पे पोस्ट करना है, तो वो क्या करने वाला है, वो काम किसको देने वाला है, वेब होस्टिंग को. ओके, सो whose work is to post our website? वेब होस्टिंग्स. ओके, वेब होस्टिंग का काम है अपना वेबसाइट या अपना वेब पेज पोस्ट करना है इंटरनेट पे.
So how it is going to do? A web host or web hosting service provider are companies that provide the technologies and services needed for the website or web page to be viewed in the internet. So what is this actually web hosting? This web host or web hosting, they are nothing but they are what? Companies. ये web hosting या web host एक company होती है जो क्या काम करने वाली है? अपने वेबसाइट या वेब पेज को होस्ट करने के लिए, इंटरनेट पे पोस्ट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी या सर्विसेज लगने वाले हैं, जैसे कि कितना स्पेस आपके वेब पेज को या वेबसाइट के लिए लगेगा, या सीपीयू चाहिए या रैम चाहिए, वॉट एवर टेक्नोलॉजी सर्विस is required by our website or web page, that things will be provided by whom? That things will be provided by the web hosting. Means that is a job or work of web hosting companies. They are going to look after all these things. Okay, once you give them our website or web page, now their work is to look after all these things, whatever is required for our web page or websites to be viewed in the internet. Now websites are hosted or stored on a special computers called web servers. So once your websites are given to the web hosting companies, what they will do? They will be storing our websites. They are going to store our websites or web pages where? On one special computer, and that special computer is what? Web server. Now what will happen? Now once your website gets hosted or stored on the server, what happens now? Now anyone, any person from anywhere in the world can view your website. Why? Because it is on the web server. तो वेब सर्वर ऐसी जगह होती है कंप्यूटर पे जहां से कोई भी जन अपना वेबसाइट देख सकता है. मीन्स यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि बस ये ही कंट्री के लोग देखेंगे, वो ही कंट्री के. वेब सर्वर में डाला मीन्स इट कैन बी व्यूड बाय ऑल दी persons or any companies. Okay, then now when the internet users want to view your website, all they need to do is watch. They have to type your web address or domain into their browsers. So if any internet user, if they want to view your website, so whatever website you are posted on the internet, on the web server, if they want to view your website, what they have to do? उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उनको सिर्फ वेब ब्राउजर में आपके वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा या फिर डोमेन का नाम लिखना पड़ेगा. फिर क्या हो जाएगा? फिर कंप्यूटर क्या करेगा? वो वेब सर्वर को कनेक्ट करेगा, फिर जाके देखेगा, चेक करेगा वेब सर्वर में कि जो भी आपने वेबसाइट का नाम डाला है वो अवेलेबल है क्या वेब सर्वर पर. अगर वो रहेगा तो वो आपको उसका साइट पूरा डिलीवर करेगा. मीन्स इट इज गोइंग टू सेंड that site to you on the browser, and then you are able to view that site. Okay, so this is all about the web hosting. Now I hope that web hosting is clear to you. So what is web hosting? क्या होता है web hosting? जो भी वेब पेजेस या वेबसाइट हमको इंटरनेट पे पोस्ट करने हैं उसको हम लोग को वेब होस्ट कंपनी को देना पड़ता है. फिर वेब होस्टिंग का काम होता है कि जो भी वेबसाइट या वेब पेजेस के लिए लगने वाली चीजें होती है, जैसे टेक्नोलॉजीज या कोई भी सर्विस उसके लिए लगेगा, वो काम वेब होस्टिंग खुद देखेगी. ओके, देन उन लोग क्या करेंगे? बाद में आपका वेबसाइट वेब सर्वर पे पोस्ट कर देंगे या फिर स्टोर कर देंगे. देन कोई भी यूजर आपके वेबसाइट का नाम अगर लिखेगा ब्राउजर पे, तो वो सबसे पहले कंप्यूटर वेब सर्वर में चेक करता है कि क्या ये वेब सर्वर में ये वाला साइट अवेलेबल है. अगर है तो फिर वो उनको वेबसाइट दिखा देगा. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वेब होस्टिंग. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग. Types of web hosting. There are lots of web hosting. There are many types of web hosting, but we are going to see only few of them. So first is shared hosting. From the name itself, we can say that here the host has been shared. So what is this actually? It is best for beginners. So shared hosting, it will be good for whom? For the person who is going to post the website for the first time. For the beginners means what? जो पहली बार अपनी वेबसाइट या वेब पेज
होस्ट करने वाला है वेबसाइट पे, या सॉरी वेबसाइट पे नहीं, इंटरनेट पे, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है. देन this is where your website will be stored on the same server as multiple other websites. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग किसको शेयर करने वाले हैं, सर्वर को. यहाँ पे एक सर्वर रहेगा, उस सर्वर पे आपका तो वेबसाइट रहेगा ही रहेगा, लेकिन और भी बहुत जनों के वेबसाइट्स रहने वाले हैं. ओके, एक ही सर्वर पे सबका वेबसाइट रहता है, उसे कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग. With a shared hosting plan, all domains share the same server resources such as RAM, that is called as random access memory, and CPU, that is central processing unit. So shared hosting plan में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही सर्वर के ऊपर सब वेबसाइट्स को, जो भी वेबसाइट्स सर्वर पे रहेंगे जो शेयर्ड होस्टिंग यूज कर रहे हैं, उन लोग क्या करेंगे, सर्वर के जो भी रिसोर्सेस है जैसे कि सीपीयू, रैम, स्पेस, ये सब उन लोग आपस में शेयर करेंगे. जितने भी वेबसाइट्स वहां पे रहेंगे उन लोग ये सर्वर के ये रिसोर्सेस को शेयर करते हैं. ओके, हाउएवर, because all resources are shared, the cost of shared hosting plans are relatively low. क्योंकि अभी यहाँ पे सारे रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, तो क्या होता है, काम तो कम लग रहा है ना, मीन्स पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, सीपीयू ज्यादा नहीं, एक ही सीपीयू उन लोग भी शेयर कर रहे हैं, ये भी शेयर कर रहे हैं, रैम भी शेयर कर रहे हैं, तो क्या होता है, इससे अपना पैसा बचता है. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, शेयर होस्टिंग का कॉस्ट होता है लो. ओके, सो नाउ दिस इज द शेयर्ड होस्टिंग. सो समझा क्या होता है शेयर्ड होस्टिंग. यहाँ पे एक ही सर्वर रहता है जहाँ पे मल्टीपल साइट्स, मल्टीपल वेबसाइट्स, आपके साथ में बहुत सारे वेबसाइट्स भी रहेंगे, और यहाँ पे सब वेबसाइट सब सर्वर के रिसोर्सेज को शेयर करेगा, जैसे कि सीपीयू, रैम, स्पेस एक्सेट्रा. ओके, free hosting. There are some hosting services which provide you free hosting of the website for limited period of time. Now, free hosting, from the name itself we can say that it is free, but free it cannot give you for lifetime. For lifetime it will be not free. It will be free for some period of time. Okay, like for it will tell you for 30 days trial. Okay, आप try करो 30 days के लिए आपका website कैसे चल रहा है. Then when you see that yes, your website has become very famous, many people, many persons view your websites, then you can think of paying for the website. Okay, then you can take any plan like shared hosting, dedicated hosting, any plan you can select. Okay, so this free hosting, one example I can tell you that WordPress, it provides you to host your website for free for some period of time. Okay, then next one is dedicated hosting. These are the paid hosting servers for large websites. Now this dedicated hosting, ये किसके लिए यूज होता है, सबसे पहली बात तो ये पेड होता है, यहाँ पे आपको पैसा भरना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स के लिए होता है, जैसे कि जो कंपनी के लिए वेबसाइट रहते हैं बड़े बड़े, वो वेबसाइट्स होते हैं. ओके, यहाँ पे इन डेडिकेटेड यू आर गोइंग टू सी लार्ज वेबसाइट्स. इन डेडिकेटेड होस्टिंग environment, you have the entire web server to yourself. शेयर में क्या था कि सर्वर को हमको सेम सर्वर रहता था, उसको शेयर करना पड़ता था, बट डेडिकेटेड में होता है एंटायरली योर्स, वो पूरा वेब सर्वर भी आपका रहेगा, उसका पूरा जो भी रिसोर्सेज रहेंगे सब आप ही के रहेंगे, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, डेडिकेटेड टू यू ओनली. ओके, सो यहाँ पे अगर ये डेडिकेटेड वेब सर्वर है तो आपको नाम से ही पता चलेगा कि क्या होता है कि इसमें ज्यादा पैसा लगेगा. ओके, कंपेयर टू द शेयर होस्टिंग इट विल बी कॉस्टिंग मोर. देन this allows for faster performance as you have all the service resources entirely without sharing with other website owners. So now this dedicated hosting, what will happen, because it is yours, you're not sharing anything with any other website owners, so what will happen, your performance will be very faster. Okay, so whenever you want to do anything, or anybody wants to view your website, what will happen, it will be very faster. So this is about the dedicated hosting. So I hope all these three types of web hosting is clear to you. So what is shared hosting? Shared hosting में क्या होता है, सबसे पहले तो ये बिगिनर्स के लिए है जो पहली बार अपना वेब पेज या वेबसाइट होस्ट करने वाले या पोस्ट करने वाले इंटरनेट पे. तो यहाँ पे होता है कि सेम सर्वर बहुत जन को मिलेगा, मल्टीपल वेबसाइट्स को सेम सर्वर रहेगा, और यहाँ पे सारे रिसोर्सेस शेयर किए जाएंगे, जैसे कि रैम, सीपीयू, स्पेस एक्सेट्रा.
सो यहाँ पे सब शेयर होता है, इसीलिए इसका कॉस्ट भी सबसे कम होता है. देन कम्स फ्री होस्टिंग. फ्री होस्टिंग ये वेबसाइट को कुछ दिनों के लिए फ्री में दिया जाता है. मीन्स वी कैन पोस्ट अवर वेबसाइट, वी कैन होस्ट अवर वेबसाइट फॉर फ्री फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. Then lastly dedicated hosting. Here you can say that it is on whole and sole yours only. यहाँ पे एक ही खुद के लिए, अगर लार्ज वेबसाइट्स के लिए ये यूजफुल होता है और ये पूरा वेब सर्वर आप ही का होता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के रिसोर्सेज को हमको किसी के साथ शेयर नहीं करना है. एंटायरली पूरे रिसोर्सेज हम ही यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट विल बी फास्टर एंड इट विल बी costlier also. Okay, now next, we have completed about web hosting. For web hosting there is no coding. How to do that, that information is given in your textbook. But if you want to host your website, I don't think so that you are going to host your websites or web pages at this stage. But whenever in future if you want to do, you can go through it. You'll know how to host your web pages. Then next we are going to see uh, programs. So coding, I will be going to show you, which is given in your textbook in the exercise. In the exercise, there is true or false, there is fill in the blanks, there is multiple choice questions, but that things are easy, that you can do it very easily. If you face any problem in that case also, you can ask me that. I am going to tell you the answer for that. But the seventh question was there in your textbook about write coding for these questions. So there are three coding questions given to you that I'm going to solve here only, so you can go through it. Now next we will see the coding. Programs. Now the first question is, write a program using HTML with following CSS specification. First is, the background color of the company name should be in green. See, this whole question is one only. You have to write the coding for this all in one HTML document only. Okay. First question is, the background color of the company name should be in green. तो यहाँ पे ये तो पता चलता है कि मुझे कंपनी का बनाना है, कोडिंग एक कंपनी के लिए बनाना है, उसमें कंपनी के नाम के पीछे का कलर ग्रीन चाहिए, बैकग्राउंड का कलर. ओके. देन टेक्स्ट कलर ऑफ द कंपनी नेम शुड बी इन रेड. Whatever your name you are giving to your company, that should be in red color. Then the heading should be large with font Comic Sans MS. Now सिर्फ heading should be large. यहाँ पे ये नहीं बताया कि font size कितना होना चाहिए and all that things. It should be large. So what you should do, you can write H1 for this. Okay. Then with font, now what is this font family? Font family should be Comic Sans MS. Then the description of the company should be displayed in a blue color in a paragraph. Now whatever thing you are going to write about that company, जो भी कंपनी का आप नाम लिखोगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना रहेगा. वो आपको किस में लिखना है? पैराग्राफ में. और उसका कलर क्या रहना चाहिए? ब्लू. सो इट इज वेरी इजी. लेकिन ये सब आपको CSS में लिखना है. ओके. ये जो भी है कैसे करते हैं? CSS में. So you can write any company's name. I am going to tell you how to write the coding for this. You can write any company's name and any description about that company. Now let us see the coding for this program. See, this is the coding. Here I have written title as company profile. Then see the style. Now my company name is Reliance Industries Limited. You can write any company's name. Okay. Then I have given style for H1. Now here the company's name, what was there in the question? That company's background color, company name के background का color क्या होना चाहिए? Green. So here see background color green. Then font color should be red. Color red means इसका color क्या आएगा? Red. Font family should be Comic Sans MS. So that I have written. Then next paragraph, whatever you are writing the description in paragraph, that color should be blue. Easy, very easy. See, इसी तरह से question आते हैं exams में. Okay. So now we will see the output of this coding. Okay, so see, this is the output of the coding. Reliance Industries Limited, background color is green, text color is red, this is paragraph and it is in blue color. This is all about. Okay, now we will see the next coding. So it is good practice if you solve it by yourself. Before looking my coding,
you do yourself. Okay, by seeing the question, try to solve by yourself. Now see, next question we will see. So see, this is the question. Write HTML5 code with CSS as follows. Now see, here also we are going to use CSS properties, okay, to create a form to accept name, age and email address from the user. So here you want to create what? Form. इस कोडिंग में हमको फॉर्म का भी यूज करना है, जिसमें फॉर्म में कौन से एलिमेंट्स रहने चाहिए? नेम, एज, ईमेल एड्रेस. Create a submit button to send the data. So how many buttons you want to create at last? Only one button, that is a submit button. Next, the heading of the form should have a background color and a different font style. तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग भी देना है फॉर्म के लिए और उसका बैकग्राउंड कलर देना है. बैकग्राउंड ना, टेक्स्ट कलर नहीं, उसके बैकग्राउंड का कलर देना है और डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल. Different font style. So you, if you remember what is font style, here you can give normal, italic, that is font style. So let us see the coding. If you know how to do, you write it yourself, then check my coding. So let us see the coding. So see, this is the coding. Here I have written title as user information. What I am writing in style? Only for the heading. What is the heading for my form? This is the heading, users information. Okay, now this users information, that should color back, that it should contain background color. This background color I have wrote pink, you can write any, because they have not mentioned the color. उन्होंने सिर्फ बोला है कि बैकग्राउंड कलर रहना चाहिए, उन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन सा कलर चाहिए. ओके, सो ये आप कौन सा भी कलर लिख सकते हो. फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, आप, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि फॉन्ट स्टाइल कौन सा चाहिए. फॉन्ट स्टाइल आपको जो चाहिए, आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा कि कौन से फॉन्ट स्टाइल्स है. सो आपको जो चाहिए आप वो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दे सकते हो. ओके, सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही था. H1 को हम लोग ने CSS दे दिया. देन फॉर्म यूज किया है. फॉर्म में कौन से आपको टेक्स्ट लेने हैं? नेम, एज, ईमेल एड्रेस. सो फॉर नेम यू आर गोइंग टू इनपुट टाइप टेक्स्ट. फॉर एज यू आर गोइंग टू यूज इनपुट टाइप एज टेक्स्ट. यहाँ पे मैंने नंबर क्यों यूज नहीं किया? इनपुट टाइप नंबर भी तो होता है, लेकिन अगर मैंने नंबर यूज किया तो क्या हो जाएगा? वहां पे रेंज आ जाएगा. ओके, और रेंज की एज नहीं चाहिए. ऐसा नहीं बोला कि मुझे इस रेंज में एज चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है. इसलिए मैंने सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज किया, और वहां पे टेक्स्ट रहेगा तो यू कैन राइट अल्फाबेट्स ऑल्सो, यू कैन राइट नंबर्स ऑल्सो. Next is email address. For this I can write input type as what? Email. So this we have studied. Here means it is going to it is going to accept only the email address with valid email ID. Okay, यहाँ पे अगर आपने @ और email domain का नाम नहीं लिखा तो वो लेता ही नहीं है. Okay, so lastly we are going to use this submit button. Okay, value should be submit. So this is all about the coding. Now let us see the output. Okay, so this is the output. See, user information, background color is pink. This is font style is italic, so it is slant. You can see the heading is slant. Then name, write any name, write the age, write the email address. Then submit the button. This is all. It is very easy, right? Now we are going to see the last coding of this video. See. This question, write HTML5 code with CSS as follows. Here you want to create order list with the names of tourist cities. So आपको एक order list बनाना है जहाँ पे आपको टूरिस्ट सिटीज लिखने हैं, यानी कोई भी सिटीज जो टूरिस्ट जहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, ऐसे सिटीज के नाम लिखने हैं. कौन से भी लिख सकते हैं, उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड चाहिए, मुझे इंडिया के चाहिए या मुझे यही स्टेट के चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. तो आपको जो चाहिए आप लिख सकते हो. देन क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट विद टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ दोज सिटीज. जो सिटीज यहाँ पे लिखे हैं उसकी टूरिस्ट प्लेसेस आपको लिखने हैं. ओके, जैसे अगर आपने यहाँ पे टूरिस्ट सिटीज में आपने अगर मुंबई लिखा है तो मुंबई का टूरिस्ट प्लेस कौन सा है वो लिखना पड़ेगा. ओके, सो जैसे कि आप लिख सकते हो मुंबई का क्या रहेगा फिर? गेटवे ऑफ इंडिया. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स मींस यू कैन राइट कंसर्न टू दैट सिटीज ओनली. ओके, देन एक ऑर्डर रहना चाहिए, दूसरा अनऑर्डर्ड. Divide the list into two sections, left and right, by using CSS. This is the main point. Here you want to divide the list into two sections. आपको दो sections करने हैं.
एक सेक्शन, एक लेफ्ट में रहना चाहिए और दूसरा राइट, और उसमें ये आना चाहिए, एक सेक्शन में ऑर्डर्ड लिस्ट आएगा और एक सेक्शन में अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसका कोडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। The coding for this question is, now see here, you have to look carefully. We are going to create two sections, left side and the right side. So यहाँ पे भी आपको CSS का यूज करना है. So how I am going to do? See, here I am using what, this dot. What is this dot actually? This is class. Okay, both dots I am using, so both are class. And this is the name of the class A. Now there are two classes I am using. One is A and the another one is B. Here A class width is 50%. Means A जो क्लास यूज करेंगे वो आपके स्क्रीन का आधा पार्ट यूज करेगा, 50%. ओके, हाफ पार्ट इट इज गोइंग टू यूज. देन फ्लोट लेफ्ट मीन्स दिस शुड बी प्लेस इन द लेफ्ट साइड. मीन्स फ्लोट जो भी आप लिखने वाले वो कौन सा साइड में आने वाला है, लेफ्ट साइड, मीन्स दिस साइड. देन बी क्लास विथ 50%. सो जो रिमेनिंग 50% है वो इसके लिए है, बी के लिए. Float right means whatever you write, that is going to float on the right side, this right side. Okay, now we will see what is that. See here, section class is equal to A. Section. Now this tag, you'll think that it is new for you. I'm going to tell you there are some tags like header tag, footer tag, nav, nav tag, section tag, aside tag. These are some tags which I'm just going to tell you here only. It is very easy tags. Header tag. Header tag means क्या होता है, नाम से पता चलता है, heading के लिए. Like this. यहाँ पे मुझे heading लिखना है तो मैं इसके लिए कौन सा tag यूज करने वाली हूँ, header tag. और header के लिए हम लोग कौन से tags यूज करेंगे, मोस्टली H1. header के अंदर आपको लिखना पड़ेगा H1 and all that things. H1 to H6 कौन सा भी heading आप यूज कर सकते हो. That is for heading. Header. Okay. फुटर मीन्स वॉट यू नो. फुटर मीन्स आपको पेज नंबर या फिर उस चैप्टर का नाम रहता है तो आप कहाँ पे लिखते हो, फुटर में. सो दैट इज यूज ऑफ फुटर. देन nav, nav. What is this nav? This nav is nothing but the navigation. Okay, it is used for, it is a navigation tag which is used to link a set of, it is used for set of links. Okay, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी links रहते हैं, जो भी hyperlinks आप बनाते हो, वो बहुत सारे जो भी links रहेंगे वो एक साथ आपको navigation tag में लिखने पड़ते हैं. ओके, जैसे कि आपने अगर Facebook का लिंक लिखा है, Google का लिंक लिखा है, HTML डॉक्यूमेंट का लिंक लिखा है, ऐसे आपने बहुत सारे लिंक्स बनाए और वो सारे लिंक्स आपको अगर साथ में रखने हैं तो आपको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, नेविगेशन टैग के अंदर. ओके, इनसाइड नेविगेशन टैग यू आर गोइंग टू राइट ऑल दिस हाइपरलिंक टैग. Okay, that is the work of navigation tag. Then section tag. Now here we are going to see section tag. So what is section tag actually? It is going to divide your screen into sections. Okay, आपके screen को वो sections में divide करेगा. Now sections means what? जैसे मैंने एक section लिखा तो वो आपका suppose ये screen है full, तो एक section है तो यहाँ पे suppose एक section को इसको यहाँ पे divide किया, दूसरे section को उसने यहाँ पे divide किया. इस तरह से आपको अगर 3 सेक्शन चाहिए तो आपको एक सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, ऐसा हर एक सेक्शन के अंदर आपको जो जो चाहिए. जैसे एक सेक्शन के अंदर आपको हेडिंग चाहिए सिर्फ, तो आप एक सेक्शन के अंदर सिर्फ हेडिंग लिखो, H1 का टैग. देन सेक्शन, दूसरा सेक्शन में आपको पैराग्राफ टैग चाहिए, वहां पे उसका डिस्क्रिप्शन है तो सिर्फ दूसरे सेक्शन में आप पैराग्राफ टैग लिखो, उसके अंदर जो भी लिखना है वो लिखो. फिर लास्टली आप लास्ट सेक्शन आपको चाहिए कि आप कंप्लीट हो गया, so you want to just thank all the viewers and all that things, then write all that things in the section part. Okay, last part. So इस तरह से वो क्या कर देगा, आपकी स्क्रीन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देगा. वो आपको दिखेगा भी कि अलग अलग सेक्शन से करके. ओके, देन नाउ व्हाट हियर आई एम गोइंग टू डू, मुझे यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में करना है. सो फ्लोट, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज दिस फ्लोट टैग. ओके, फ्लोट हमने पढ़ा था. फ्लोट लेफ्ट मीन्स व्हाट, whatever you are writing the text that will be floating on the left side में रहेगा. Right means it is going to place your contents on the right side. Okay, so यहाँ पे मैंने section class A को बुलाया है तो एक section मेरा divide हो गया. Okay, एक section में क्या आने वाला है, H2 tourist cities, यानी cities के नाम आने वाले हैं जो H2 में रहेंगे. फिर इसके अंदर क्या क्या आएगा, OL लिखा है, OL में मैंने टाइप नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा टाइप लेगा, 1 2 3 4. Then this is ordered list. Okay, so here the tourist cities are Delhi, Agra, Jaipur, Goa.
Okay, so one section, now this section is towards, this is going to be placed where on the left side. Okay, अगर मैंने लेफ्ट नहीं दिया तो ये सिर्फ आउटपुट में जहां पे भी जगह है हेडिंग के बाद, उसके बाद वो एक सेक्शन ले लेगा और वहां पे उसको डिस्प्ले करेगा. ओके, देन width 50%. Okay, means it is going to occupy the 50% of your screen. Then next section is, here I'm going to close this section. Okay, it is very important, you have to close this section. The next section, class B. P के यहाँ पे जाएगा, उसको भी width 50% दिया है, means वो आधा अपना हिस्सा यूज करेगा. Okay, then it is going to float right, means whatever you are writing here, this is going to be placed towards the right side. Okay, यहाँ पे place करेगा right side में. See, if you're not using this width, what will happen? It is going to float on the extreme left and extreme right. Okay, अगर आपने ये width नहीं लिखा तो ये पूरा right means ये end में आएगा, right side में. Okay, एक ये end में रहेगा और एक ये end में रहेगा, इसलिए width लिखना compulsory है. width 50% लिखोगे तो इसका काम यहाँ से लेके यहाँ तक ही था, खत्म हो गया. Okay, so अभी इसके बाद राइट साइड का पार्ट चालू होता है, तो फिर विथ 50% means it is going to place your this side here only. You can see in the output also. Here I'm going to see, I'm writing H2 tourist places. So we are going to write the places for this concerned cities only. जैसे कि यहाँ पे हमको unordered list use करना है, तो I'm using your UL type is equal to square. So your square will be placed in front of this cities. Okay, places. Now Delhi. Delhi ka tourist place, Red Fort. See, there are many. You can write anyone. Agra, Taj Mahal. Jaipur, Pink City. Goa, Arabian Sea beaches. Okay, so this is all about the sections. Now we will see the output so that idea will be clear to you how it should be displayed. Let us see the output. This is the output, your tourist cities and your tourist places. तो यहाँ पे पूरा प्लेस सिटीज का नाम आ गया और उसके कंसर्न जो प्लेसेस है टूरिस्ट के वो आ गए. देखो ये विथ 50% लिया, आपने अगर स्क्रीन देखोगे अच्छे से तो ये 50% यूज करा और ये 50%. अगर हम लोगों ने विथ 50% नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, तो फिर ये लेफ्ट साइड में आएगा और ये एक्सट्रीम राइट साइड में आ जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव परसेंट आल्सो. ओके, so this is compulsory, that width and float is compulsory to give. Okay, so this is all about the coding. So 3 exercises were there in your textbook that I have explained to you. If you have any other doubts related to the exercises, I am going to solve that for you. You just ping me the message and I will tell you what the answer about that. So this is all about today's session. We have completed our first chapter. At last we have come to the end of this chapter. In the next lecture we are going to study next chapter. Next chapter I'm going to teach you is database. Okay, that is also practical related chapter. I hope that you might have studied some part of database in 11th standard too. Then also we will revise some points and we will start our new chapter. So this is all about today. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.